Yes, children, that is the part 3 solution for chapter number 1, in which the question number we have just discussed from the question number 25 and remaining question. So, copy down in the notebook, children. Yes, this is the particular questions which are cancelled, children. 23, 24 we have already discussed, and 30, 32, 33, 34, 35 they are the self-practice questions. So, you have to do by yourself. I'll give the solution definitely, because these are the questions which are related what we have done. Now question number 25, that is related with the difference between mole and molarity. So 0.50 mole of sodium carbonate and 0.50 molar Na2CO3. So what is the difference? So children, when we'll talk about mole is the terms which is related with the atomic mass or the molecular mass. So when we'll talk about 1 mole of Na2CO3, that is equal to its atomic or molecular mass. So Na2CO3 का सबसे पहले अगर हम molecular mass ढूंढते हैं तो यहाँ पे 2 एटम है सोडियम के, so I have written 2 into 23, प्लस कार्बन का एक एटम है तो I have written 1 into 12 and oxygen I have written 3 into 16. Children, when we just add all the values, we are getting the molecular mass or molar mass, that is 106 gram per mole, that is for sodium carbonate. हम अगर मोल को रिलेट करते हैं मोलर मास से, तो एक मोल अगर 106 ग्राम पर मोल के इक्वल है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 106 ग्राम पर मोल, तो हम हाफ मोल की बात करते हैं तो वो हाफ हो जाएगा 53 ग्राम पर मोल. तो ये हो गया कि 0.50 मोल है, उसका रिलेशन अगर एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास से करते हैं तो वो है 53 ग्राम पर मोल. अब है मोलारिटी की बारी, मोलर की बारी. 0.50 मोलर, डेट मीन्स that much of mole or that much of gram is dissolved in liter solution, 1 liter of solution. That means 0.50 molar की बात करें तो 53 gram of Na2CO3 is going to be dissolved in 1 liter of solution. So that is the different 1 mole of Na2CO3, that is 106 ग्राम, एंड 0.5 मोल अगर बात करते हैं तो हो गया 53 ग्राम. और अगर 0.50 मोलर की बात करते हैं तो उसका मीनिंग हो गया कि 50 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व किया है. डेट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25. सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर whatever the particular you can see here. 26, 27 we don't have to do, then 31 also we don't have to do. Now we are just moving on the question, that is 28, related with the number of atoms. Number of atoms already we have learned in 9th class. यहाँ पे पहला गोल्ड दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. अब गोल्ड का एटॉमिक मास हो गया 197 यूनिफाइड मास. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो 1 अपॉन 197. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे ढूंढेंगे? वी हैव जस्ट यूज द फॉर्मूला चिल्ड्रन इन द 9th क्लास, दैट नंबर ऑफ मोल डेट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन द पार्टिकल्स. सो एन ए अगर मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स तो मैं ढूंढ सकती हूँ. दूसरा मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे ढूंढ सकती हूँ? दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, यहाँ पे n लिया मैंने, तो n इज इक्वल टू n इंटू एन ए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये वैल्यू को. तो नंबर ऑफ मोल 1 अपॉन 197 इंटू एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, दैट इज एन ए, वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिले हैं 0.030 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड. नाउ सेम मैनर में मैंने सोडियम के लिए फाइंड आउट किया है. एटॉमिक मास सोडियम का है 23, सो नंबर ऑफ मोल गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास 23 और एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिली है वो है 0.26 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, डेट मीन्स दैट इज मोर देन गोल्ड. ये वैल्यू गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा है. अब लिथियम की बात करते हैं तो 1 अपॉन 7 इज द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड टू एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. तो मुझे वैल्यू मिली 0.86 इंटू 10⁻23. ये वैल्यू गोल्ड सोडियम से ज़्यादा हुई है तो हम बोलेंगे लिथियम की वैल्यू गोल्ड और सोडियम से ज़्यादा है. नाउ द फोर्थ वन, दैट इज chlorine, it is diatomic molecule of chlorine, that means 2 atoms of chlorine are there. So it's also going to be find out by the number of moles, that is 2 chlorine atom into 6.022 into 10⁻23 upon 71. तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली है 0.16 इंटू 10⁻23. डेट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ
गोल्ड की, तो गोल्ड के पास है 0.030 इंटू 10⁻23 एटम्स. देन सोडियम की बात करते हैं तो वो है 0. वॉट एवर द वैल्यू विच वी आर गेटिंग फॉर सोडियम, it is, when we talked about, it is 0.26. here you can write it 0.26 into 10⁻23. लिथियम की बात करते हैं तो 0.86 इंटू 10⁻23. एंड क्लोरीन की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0.16 इंटू 10⁻23. तो ये सब में जो भी वैल्यू ज़्यादा है वो है लिथियम की, तो हम बोलेंगे लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड दैट इज इक्वल टू 0.86 इंटू 10⁻23. Question number 29 is related with the mole fraction. Children, we have learned about the mole fraction for any of the particular component. It is number of moles of particular component upon total number of moles. That means Na we are taking for mole of the component 1 upon N1 plus N2 we can take. Now here when we talked about the molarity of solution of ethanol, that means ethanol is dissolved in water. So we are finding the number of moles for water first. Here when we talked about number of moles for water, that is always equal to 1000 gram upon 18 gram is equal to 55.55 mole. You to always take, and if number of moles of water is not giving, then we always have to take 55.55 number of moles. Now when we talked about the calculation of number of moles of ethane, so what we are suggesting that we suppose we are taking the number of mole of ethanol taken as Na. Then mole fraction Xa, that is equal to Na, that is number of mole of ethanol, upon number of moles of ethanol plus number of moles of water, that is 55.55 mole. And that number mole fraction already we have, that is 0.040, so we are writing 0.040. Now number of moles of ethanol, that is equal to, we cross multiply that value over here, so what we are getting is 0.040 into Na plus 55.55. So 0.040 Na plus cross multiplication of that value, that is 0.055 and 0.040 and 55.55, that comes equal to 2.22. Now we are taking that Na on one left hand side, so Na minus, that is number of mole of ethanol, minus 0.040 into number of moles of ethanol, that is equal to 2.22. Now we will just take it out Na, so Na, that is common out, Na into 1 minus 0.040 is equal to 2.22. Na, that is the number of moles of ethanol, and A, that is equal to 2.22 upon 0.96, that is equal to 2.31 molar. So molarity which we are getting, that is 2.31 molar. So children, that is the mole fraction. Mole fraction अगर मुझे ढूंढना है तो I'll just apply the method, apply the formula, that is equal to mole fraction. मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है. मोल फ्रैक्शन अगर दो कंपोनेंट के लिए है, देन वी आर टेकिंग एज x1 एंड x2. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन, हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड आउट, विल सी द फॉर्मूला. The component A and component B. Mole fraction of component A, that is denoted by XA, and you can write XA, that is equal to number of moles of A, that is Na, upon number of moles of A, that is Na, plus number of moles of B, that is Nb. In same manner, mole fraction for component B, that is equal to XB, and XB, that is a mole fraction of B, that is equal to number of moles of B, that is Nb, upon total number of moles, that means number of moles of A plus number of moles of B. Children, we have learned that mole fraction, addition of mole fraction, that means XA plus XB is always equal to 1. So how we will calculate out, that is XA plus XB, when we will just adding both of the mole fraction, XA, when we will just inserting the value for mole fraction of A, that is Na upon Na plus Nb, plus the mole fraction for B, that is Nb upon Na plus Nb. So we have Na plus Nb, we will just taking out the LCM, so Na plus Nb, so whole term cut and we are getting the value 1. So this is the method how we are finding out the mole fraction
मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स का होना बहुत ज़रूरी है. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को हम ऑलवेज एक्स ए या तो x1 से डिनोट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दैट इज Na, or you can write N1 upon N1 plus N2, or either you can write Na plus Nb. It's not necessary to always written as A, you can write with N1 also. In same manner, mole fraction of component B, that is Xb, or you can write X2 also. Here you can write X1 also, here you can write N1 also, here N1 or N2. Okay children, so that is the method how to find out the mole fraction, and addition of mole fraction is always equal to 1. That means you can write that XA plus XB is always equal to 1. हमेशा दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो भी एडिशन होगा वो इट्स ऑलवेज देयर टेकन एज 1. So that is the mole fraction, how to find out the mole fraction and how to find out the mole fraction, number of moles by using the mole fraction. So this is all about what? That is all about the question which we have solved. Now whatever the practice question I have given, so that is there in the next particular lecture in the form of PDF. So if you have doubt, you can just go through that solution and copied out all the particular exercise question in the notebook, children. So that is the particular chapter which we have completed along with explanation and exercise. From the next particular lecture we are starting with chapter number 2, that is structure of an atom. Thank you children.